सिटी में या हर जगह पे पॉजिटिव साइड के अलावा नेगेटिव साइड भी गंगा का होता जा रहा है, उस पे आपका क्या टेक है? I think what the show will do, attempt to do is जब लोगों को प्यार महसूस होगा और and people will discover their love for the river, that is what I think will propel them or convince them to do more to protect her. There are a lot of amazing human beings जो गंगा के किनारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं. लेकिन I think the stage at which she is at which she is now and the amount of pollutants that we witness today is not the outcome of a few months of apathy. It's years of ignorance and years of apathy, and it will take some time for us to overcome that lack of awareness and that apathy. But there is a lot of work happening on the ground. बहुत मेहनत हो रही है. लेकिन like many other things हमारे देश में जो हम देखते हैं, it's a corruption of conscience that has led to the pollution and the rapid rate of pollution of the river. And we can see that in many other aspects of our society. But the good news is that there are great people, young people, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हार नहीं मानते. सफाई करते जाते हैं, कोई आके गंदगी करता है, फिर जाते हैं साफ करते हैं. बिल्कुल वो सीन है ना मुन्ना भाई में, वो आदमी रोज थूकता है, बच्चा आके साफ करता है पानी से, फिर आके आदमी थूकता है, फिर पानी से साफ करेगा. वैसे ही ऑन द ग्राउंड काम हो रहा है. लेकिन ये सिर्फ कचरे वाला मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्शियस choices that people will have to start making. जो होटेलिंग इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो on the banks of the river there are many other things that are happening that are leading to the pollution of the river. लोग actually law follow करेंगे, rules follow करेंगे तो सफाई रख पाएंगे. प्रॉब्लम ये है कि हम law थोड़ा ज्यादा ही तोड़ते हैं हमारे देश में. Yeah, We've had a lot of questions from that yeah, table. I'd like to ask last one. जी. I'd like to ask you that how will you define Ganga? What's the definition of Ganga according to you? Life. She embodies life. She is the complete and absolute embodiment of life. The giver, the nurturer, the provider, the impartial, the blessing. I really have nothing more to add to that. I think that should kind of encompass everything I would have to say about her. Do we have another question from the back? Yeah. Hi dear, Sir, Faizan. we'll make sure that it comes to you. Sir in the white shirt. I'll make sure it comes to you. Let's just give everyone at the back a chance, yeah? Yes. Okay. Hi dear, Faizan this side from Bollywood Helpline. Hi. And my question is for you कि कितनी डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस शो के लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Sorry, आपने कुछ क्या पहले क्या कहा था आपने? Detailing. हाँ जी, कितनी डिटेलिंग करनी पड़ी आपको खुद को रेडी करने के लिए शो के लिए? खुद को रेडी physically challenging तब तक रहा when we were in the higher terrain, higher planes. So there was a few things that I had to do. It's an interesting question. अच्छा हुआ आपने पूछा, क्योंकि ये बात शायद कहीं रह जाती. क्योंकि ऐसे चीजों में हम लोग ज्यादा डिटेलिंग की बात नहीं करते हैं, unless you're of course the concept writer and you're putting things together. But I needed to be physically fit to take on the terrain that we were going to. काफी ऊंचाई पे है ये जगह जहाँ पे शुरुआत होती है गंगा की, और तो रोज सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना, जितना हो सके उतना अपना फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाना. But that apart, what I really loved about this experience is that it was free flowing. So what Shrikant and Apratim, my director, did was उन्होंने बहुत strategic points पे ऐसे लोगों के साथ मेरी मुलाकात करवाई जो उन्हें लगता था मेरी मुलाकात उनसे होनी चाहिए. लेकिन बाकी जो जितनी भी moments हैं, even the interactions with the individuals, nothing on the show is scripted. Not one moment, not one word. It was almost like there's 11 cameras were unleashed on me and I was like flowing. And that's what made it great fun. क्योंकि हालांकि दिन बड़ा लंबा होता था, ऐसे काफी मर्तबा हुआ है कि हम
5-5, 6-6, 7-7 घंटे गाड़ी में सफर तय करके कोई जगह पहुंच के वहां पे शूट करके बिल्कुल थोड़ा समय मिलता था to get to like, and we stayed in the most obscure places, the smallest hotels, stopped and met people, suddenly decided to shoot. It's been a very organic process. Very hard work, क्योंकि दिन के 16 घंटे, 17 घंटे, कभी 15 घंटे नॉन-स्टॉप काम, क्योंकि आप जब ड्राइव भी कर रहे हो किसी जगह पे आप एक्चुअली रेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई वुड बी लाइक माई आईज वाइड ओपन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो टेकिंग इट ऑल एंड आस्किंग क्वेश्चंस वंडरिंग वेदर वी कैन स्टॉप, बिकॉज अप्रतिम एंड मी वुड बी ऑन वॉकी टॉकी ऑल द टाइम. तो आई एम लाइक, सर शुड वी स्टॉप हियर, इजंट दिस ब्यूटिफुल, शुड वी कैप्चर दिस? So and then of course he would also want to suddenly stop somewhere, go to a dhaba, suddenly speak to an individual or a person who he thought looked like a very interesting character. But the beauty about this experience was that, you know, we keep saying everybody is a story waiting to be told. And in fact, that is so true, because all it takes for you to strike a conversation, even if it is a complete stranger, and you discover there's a story there. They're coming from somewhere. उन्होंने कुछ किया है अपने लाइफ के साथ. और ये जो कॉन्वर्सेशन मेरे लिए थी, मतलब फॉर मी पर्सनली ऑल्सो, जस्ट सो मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग, क्योंकि जब आप सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो, एक अर्बन लाइफ में रहते हो, तो आई थिंक यू काइंड ऑफ लिव इन बबल्स. आपका घर आपका बबल होता है, आपका ऑफिस या वर्क स्पेस आपका बबल होता है, आपकी गाड़ी या जो लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट्स योर बबल. जब आप स्लो ट्रैवल करते हो और उस बबल से निकलते हो, अपने आप को निकालते हो उसमें से, एंड यू पुट योर सेल्फ इन टू वट यू कॉल द रियल वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस रियल पीपल ऑन द ग्राउंड, you discover what life really is and how magical it can be. Yeah. And how tough. Yeah, Diya, one more question from Ji, me. sir. If we compare you with river Ganga, what's the similarity between you and Ganga? Why don't you tell me? Huh? Why don't you tell me? I think I would like to believe that as a human being, I care most for life. I respect life. I give a lot of love freely without expecting any in return. And I don't judge too easily. So I think those are probably a few of the qualities we have in common. And I'm bubbly. And I'm full of life. And I'm willing to learn and embrace. Diya ji, mera So, question. just 1 second, that lady's been waiting and you can go after that, yeah? I'll let you go after. Thank you, Yeah, sir. thank you. Hello, Diya. My name is Lata Mohandas. I am very, very excited about this show. I can't wait. I think I'm as excited as all of you for the 1st of May. And I think it's going to be a great show. I take this opportunity to wish you all, all the success. I can see a lot of hard work has gone into it, and I'm sure it'll do very well. Now, my question is, you said it was a professional and a spiritual journey, a personal, professional, and spiritual journey for you. Now, how have you evolved spiritually? Specifically spiritually, how have you evolved? I think I've always been. I'm somebody who does yoga. I meditate. I have been meditating for years. But when you meditate on the banks of the Ganga in Rishikesh, and you practice new asanas, and you speak to people who are spiritually evolved, there are many things that I think there's a basic knowledge that all of us are born with. There are certain truths that we all come with an awareness with. And of course, life and its many constructs kind of beats that out of you. And I think these opportunities kind of make you go back to that learning, go back to that knowledge. But the one beautiful thing that I repeatedly discovered through the great individuals that I met along the way was the emphasis they laid upon the noise in the head, taking away from the opportunity to be happy. And a lot of the people I spoke to on the ground, when you see the show, you will discover, say that happiness can only exist when you do what you love. Right. And I just felt so grateful
because I think in more ways than one, it was a very, very decisive moment in my life about 7 years ago when I said to myself, that what gives me joy. And I'm eternally grateful for the opportunities that have come, because it is really that joy that translates into everything that you do. And professionally and personally, would you say you have arrived? I've arrived the day I was born, just as we all do. Professionally and personally. Okay, fine, yes. we all Did have. you get Thank my answer? Thank you, ma'am. I'm going to go back to the gentleman at the back and Yeah, I'll come me to now. you, ma'am. Yeah. दिया जी राज कपूर साहब भी कह गए थे कि करे क्या बेचारी जिसे अपने ही लोग डुबोते, गंगा जी के बारे में कह गए थे। आप चारों से क्वेश्चन ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं लोग सुधर जाएंगे बाद में, गंगा के साथ ऐसा नहीं करेंगे अन्याय? आप लोगों ने जो सर्वे किया होगा, लोगों को तैयार किया होगा। जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरी कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, एंड ईच वन ऑफ अस हैव गॉट टू डू व्हाट वी हैव गॉट टू डू। तो एक सोक्रेटिस की तकरीबन 200 BC की कहानी है जिसमें ही वॉक्स, सोक्रेटिस या एरिस्टोटल की कहानी है जिसमें ही वॉक्स ऑन दिस बीच एंड ही सीज दैट देयर इज दिस गाय जो कि बार बार जितनी भी मछलियां पानी के बहाव के साथ बीच पर आ जाती हैं, वो पूरा का पूरा ढेर लगा हुआ है वहां पर। वो उनमें से एक एक मछली उठाता है और उसे पानी में फेंकता है। तो एक बंदा वहां से गुजर रहा होता है, तो ये पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? एंड ही पिक्स अप अनदर फिश एंड ही थ्रोज इट इन द वाटर एंड ही सेज इट मेक्स अ डिफरेंस टू दैट वन। So each one of us have got to do what we've got to do, right? And that is what will collaboratively possibly make the difference that we as people need to be finally attain. And that's exactly what the Ganga project is all about. Also, I think, sir, what will become very evident through this journey is the fact that बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी और के इंतजार में नहीं रुके हैं। वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और वो जो कर रहे हैं उनको देखकर बहुत बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। Waiting for somebody else to act upon